properly? If yes, then please write yes in the chat box. क्या आपको मेरी मीठी मीठी आवाज आ रही है? अरे बता दीजिए, कैन यू गाइज हियर मी प्रॉपरली? बैंग ऑन गाइज, बैंग ऑन. आज तो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी वॉचिंग दिस सेशन. क्या बात है. YouTube पे भी आवाज आ रही है मेरी? YouTube वाली जनता एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिए YouTube लाइव में. शिव कुमार इज सेविंग आई विल बी सिटिंग ऑन Zoom प्लस आई विल बी ऑल्सो कमेंटिंग ऑन YouTube लाइव. वेरी गुड शिव कुमार. So proud of you, Shiv Kumar. But first of all, guys, before I start this session, I would love to congratulate each and every one of you guys sitting out here, because it has been a years of a dream which you have been able to accomplish. A round of applause for all of you guys from my side, and congratulations on becoming a chartered accountant. Hi. Oh, मजा ही कुछ और है CA बनने का, right? And I'm really happy with each and every one of you, the level of efforts you have put in. You have made your family proud, you have made your parents proud. But it's once more, it's a time once again for you guys to make your family proud by getting a best package in the industry, by getting into dream companies and dream domains. And that is why we are here for this session. Okay, so let us set up an agenda for this session, and I'll be very clear, right? Please understand this. Today's session we'll be discussing end to end about how the campus works, which is there, right? Pratik ji आपको chance देंगे share करने का, tension मत लीजिए, है ना? तो today we'll be discussing end to end about how the campus works, which is there. आपको पूरा बताया जाएगा कि campus placements work कैसे करता है, what all things are there, what is a shortlisting parameter, where do you fill out a form, which is there. We'll have one more video where I'll be teaching you out how to fill out a form. But campus work कैसे करता है, shortlisting कैसे होती है, every damn thing I'm going to be explaining it to each and every one of you. Please listen this session very, very carefully. We'll be drawing one chart in this session so that you don't miss out on important timelines, which is there. After that is done, at the end, we'll open the forum for Q&A and doubts. ठीक है दोस्तों, that is there. I'll be happy if you're carrying a pen and paper, which is there. Pen, paper, Lali ji, you'll be requiring for the same for this session. So please be attentive. Whatever I'm going to be discussing it out is going to be the 1 hour of this session is going to be very, very important. Nazar hati, durgatna gati. Chalo, great guys. Now, before I start the session, just wanted to tell all of you guys, this is the website for ICAI campus placement. So what is the website for ICAI campus placements? By the way, this time the ICAI have been kind enough to segregate their committees. पहले ये CMIB committee के अंदर आता था, if you don't know, since I've been into this industry for a very long. So this was a part of a CMIB committee. Now they have separated these two committees, which is ICAIplacements.ici.org. तो many of times you will be going to cmibplacements.org. पहले ये वेबसाइट थी ICAI campus की. Now it has been changed, right? So many a times in some of the form when you're going to be reading this out, some FAQs or brochure or somewhere, तो कहीं ना कहीं I think there is some mistakes which is there, है ना? कहीं कहीं पे you will be able to find out this website CMIB वाली. So a lot of people will get confused कि why the hell this website is mentioned here, है ना? जैसे कि आप कहीं पे भी देखोगे एक दो जगह यहाँ पे है, एक दो जगह छोटी छोटी मिस्टेक है. जैसे देखो यहाँ पे you can really see, right? CMIB website. So all of a sudden when you're going to be reading this website, you'll be saying that what the hell is this? No, beta, the website for this year campus has been changed to ICAIplacements.ici.org. Okay. Now, very, very important before you go forward, right? There are going to be 4 brochures which has been out. We are going to be discussing each and every line in very detail, and I'm going to be explaining you how does the campus works, which is there. Number 2, right? You will be able to see all the updates which are going to be coming to a campus, including the list of companies which are going to be participating in the campus here itself. तो जो भी companies campus में आने वाली है उसकी list यहाँ पे मिलेगी आपको, right? In upcoming days you'll be able to see some list of companies which are going to be coming in the campus. I'll just show you the list of campus which is there, what I'm referring to. I'll just show you the September ka list. So I have a list of all the attempts of a campus which is there, but just give me a fraction of a second. So I'm referring to this type of list is going to be uploaded in the portal, not now, within few days. तो कुछ दिनों में इस प्रकार की एक लिस्ट आउट होगी where you will be able to see center wise details, company name, interview date, type of interviews is going to be there. ये लिस्ट कहाँ आएगी? This list itself you will be able to see in the same website which is there. I hope this is clear to all of you guys. Okay. Now, before you move forward, please understand, right? Today, by the end of a session, I'll be expecting everybody which is there. What you are supposed to do, you are supposed to go to a candidature section. Once you are here, you are supposed to register yourself from here, right? Now, very, very simple thing. Who is eligible for this campus? Very simple thing.
who have cleared this examinations in January 26. That means one group has been cleared earlier, second group has been cleared now. Both the groups has been cleared now. They are eligible, sir. Sir, number two, are students who were passed out of November but did not sit for the campus earlier. तो जो नवंबर वाले बच्चे थे, नवंबर वाले मतलब जो लास्ट अटेम्प्ट वाले थे, सितंबर वाले, who cleared in the last attempt but did not sit for a campus, are they eligible to sit for a campus? The answer is yes. But the only problem is when they are going to be creating their account, when they are going to be putting their roll number here, which roll number we are supposed to put here? The last attempt, the last examination. That means अभी जो जनवरी वाला है वो roll number, नवंबर वाले सितंबर वाले हैं, तो if you are supposed to put the सितंबर वाला roll number. But if you're a September attempt student, you are supposed to write down N after the roll number, which is clearly mentioned here. अगर आप जनवरी को छोड़ के कोई भी अटेम्प्ट वाले हैं, यू आर सपोज टू राइट डाउन द रोल नंबर ऑफ द current examination or the last examination you gave. After that, you're supposed to put the N after this. Okay, we'll discuss about the eligibility and stuff which is there, right? So once you are going to be on this portal, let me just log in. How does it looks like? And of course, there are going to be a lot of issues which you're going to be facing out here. Now, first basic thing, right? The first basic thing which is going to be happening with many of you, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे. इस कैंपस के जर्नी में यू विल बी एनकाउंटरिंग अक्रॉस मल्टीपल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, राइट? कभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो कभी आपका लेट्स से यू विल नॉट बी एबल टू रीच आउट टू द राइट पीपल, और समटाइम्स यू विल not get an interview update which is there. So whenever you are going to be facing any issue related to the campus, right, let me just help you with the support line which is issued by an ICAI. सभी को रिक्वेस्ट है ये नंबर अपने फोन में, as well as you can save it out with yourself which is there. Okay, so let me just show you the number which is, एक सेकंड दीजिए बस. ICAI campus, this is January. हाँ, तो let me just show you what is the numbers issued by ICAI this time. ये नंबर और ईमेल आईडी सब प्लीज अपने पास सेव करके रख लीजिए. If you are stuck somewhere while you are creating your account, you will face many times issues, right? काफी बार आपको issue आएगा, काफी बार आपको you will be not be able to see your shortlisting. Many a times, even if you see your shortlisting, you will face some any issues which is there. You are supposed to email it to ICAI on cajobs@ici.in, and you can call them also on this two given numbers. Of course, during the work timings, you are supposed to call them, which is there. And once you are going to be calling them, they will be happy to solve your queries and doubts, whatever doubts they have. ठीक है sir, that is the first time. Now sir, why I told you this, please understand this very very clearly. Now what is going to be happening here when you're going to be log into a portal? Just let me log into a portal which is there so that you get a more clarity. Now this time IC has made some changes which is there. Now I know there are a lot of questions which people have, sir, do I need a CV when I'm creating account? Do I need this? Do I need that? Which is there. Let me just log into a portal. So once you have created your account which is there, right? जैसे मैंने अपना account create कर दिया. Now many a times what is going to be happening here is, let's say I just go on the outside website. हाँ, let's say when I'm creating account, कहाँ से करना है? Campus placement candidature section. Once you are going to be creating your account, register here. Many a times it will throw an error. Your account already exists. अब बोलोगे मैंने तो बनाया नहीं. Who the hell has created my account? First problem you will face here. मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ. Second problem, it will say that roll number does not exist. From my experience of 6 year, I'm telling you. तो डोंट बी अंडर स्ट्रेस. बोलोगे ऐसा कैसे, मेरा रोल नंबर नहीं है, मैं तो दिया है, आई हैव गिवन द एग्जाम, हाउ द हेल इज दिस? नॉर्मल है, आपके लिए अब नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है, बिकॉज हर टाइम में यही होता है. तो डोंट टेक स्ट्रेस. नंबर 3, बोलेगा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट और सम इशू विल बी देयर, डोंट वरी, ईमेल इट टू द ईमेल आईडी व्हिच आई हैव गिवन इट टू यू. वंस इट इज डन, यू विल बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस. ओके, ऐसा आपको एक फॉर्म दिखेगा, एंड वंस यू विल बी लॉग इन आउट ऑन योर पोर्टल, यू विल बी एबल टू सी इट. सर लॉग इन का कहां पे दिखेगा? सेम कैंडिडेचर सेक्शन में. वंस यू विल ऐड योर रोल नंबर and password and capture, you will be able to see this. Once you see this out, this time ICAI have asked to sign a declaration which is there. That means they have issued one small declaration form. No rocket science, कोई ऐसे कोई rocket science नहीं है, एकदम simple declaration form है which is there, that you are going to be sitting for a campus, you are in a genuine need of a job and all this stuff which you are supposed to submit it. ठीक है, वो आपको भर के देना है. And after that is done, you are supposed to upload that declaration form. So I have a declaration form which is there. I'll just show you the form which is there as well. ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना. यहाँ पे अब देखो कुछ इशू आ रहा है, अब ये फॉर्म ले नहीं रहा है, इट इज ओनली टेकिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच इज देयर. बट ठीक है, आई डोंट हैव एज ऑफ नाउ वर्ड डॉक्यूमेंट, बट डोंट वरी. So let me just show you the declaration form which is there. So this is a declaration form which is issued by an ICAI.
हाँ, एक सेकंड दीजिए। हाँ, दिस इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म विच इज इशूड बाय एन आईसीआई, विच यू आर सपोज टू राइट डाउन की आई, योर नेम, if you do not have a membership number, it's fine, put your WRO number, SRO number, CRO number which is there. Okay, I understand in the need of a job, and I am aware that I'll not decline for the job after I accept the offer letter. All this stuff you have to mention. You have to mention your place, date of birth, signature, name and student membership ID. That's it. ठीक है, ये सब चीजें आपको डालना है in upload the form which is there. Once this is done, you are now eligible to fill out the entire form. आर वी गोना बी लर्निंग हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म? ये कोई बड़ा चीज नहीं है, फॉर्म फिल आउट करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। व्हाई? बिकॉज इट्स जस्ट बेसिक, लाइक पुट योर ईमेल आईडी, एड्रेस, करंट स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, वो सब अभी नहीं सिखाएंगे। फॉर दैट आई अपलोड अ सेपरेट वीडियो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, that is going to be there on my YouTube channel, don't worry. But today we will be learning the most important thing, ki how does the campus shortlisting works, how does this journey is going to be there for you, वो आज हम लोग समझेंगे। एंड वी आर गोना बी अंडरस्टैंडिंग द एंटायर ब्रोशर ऑफ अ आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स टुडे। तो नाउ आई रिक्वायर एवरीबॉडीज 100% अटेंशन विच इज देयर। ओके, अब ध्यान देंगे। Now, before I move forward, this time, if you could see this out, this is the brochure which is issued by Institute of Chartered Accountant, which indicates that this is a 64th campus placement program. That means 63 campus placements ICAI have already conducted in the past. Now, ICAI itself has been kind enough to showcase their results also of the last campus, which was not out, by the way. And the last campus का results out नहीं था, तो out हो चुका है अब। तो if you see, and in fact I have one more update, right? तो last attempt में 11,446 chartered accountants got cleared. ठीक है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो out of which ICAI is saying that out of which 2,400 number of jobs were offered by a placement organization and 1,089 accepted the candidate. मतलब कंपनी ने ज्यादा ऑफर किया था, कैंडिडेट ने कुछ उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो 1,800 जॉब्स वर ओनली गिवन आउट ऑफ some 11,400 chartered accountants who have got clear. I'm not making you scare, I'm making you aware. What is the percentage of the people who have got jobs via campus? Is approximately 20-25%. ये मैंने नहीं बोला है, आईसीआई का ब्रोशर में जो आपके पास भी है। एंड द हाईएस्ट पैकेज विच वाज ऑफर्ड वाज 32.33, विच वाज ऑफर्ड बाय डी शॉ। ठीक है, so that was a package which is offered by DSHO in the last campus, which is there, but this is the statistics. And don't worry, it's the same statistics which is there. If you see it out, 20-25% he placements majorly, you'll be able to see it out in the campus, which is there. Ki, this we see the January attempt, again, it was 26. Last attempt, you see May 25, 20%, 25%, 18%, 25%. So almost the placements are on the same line which is there. But let me tell you one great thing about a campus. One great thing about a campus is, if you see the list of companies which are there, lot of companies which you see it out here, many of the companies are very rigid, they don't come and hire off campus. जैसे कि PSUs will never come and hire off campus many a times, right? Lot of companies like ITC, they are very particular about hiring through campus only. Dell, they'll be hiring through campus only, right? Accenture Consulting, there's a consulting leg of Accenture which offers a package of I think 21 odd lakh, that hires to campus only. Hero Motocorp, very particular about campus only. Vedanta prefers candidate hiring via campus, which is there. तो ऐसे काफी सारी कंपनीज है which are going to be coming into a campus which you will not see in off campus. But of course there are a lot of companies who have already started hiring off campus which is there. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैंपस बेकार है, बर्बाद है। प्लीज अंडरस्टैंड, कैंपस इज अ एडेड एडवांटेज फॉर ईच एंड एवरीवन सिटिंग आउट हियर. What does it means? It means that you also have to try applying off campus which is there. Campus में मिला बहुत बढ़िया, but off campus भी there is a huge market and huge vacancies which has been started in the market out. I hope this mindset is clear to all of you. Okay, sir. Now let us understand this brochure in details, but before that, let us draw a most important timeline which is there. Let us draw a timeline which is gonna be the most important timeline for every one of you. I would be happy if everybody can draw this timeline with me parallelly, because this timeline is something you have to understand in this entire journey. And if you don't understand it nicely, it is gonna be creating a problem and chaos for you guys. Okay, sir. Now, please understand the campus form filling date has already been started, which is there. 7th of March is the start date of a form filling. But this time I was not able to see what is the last date to fill out a form. Did anybody saw what is the last date to fill out a form if you have got over the mail? Anyone in the chat box? किसी को कोई लास्ट डेट पता है फॉर्म फिलिंग की? आ गया है कि मेल पे डाला होगा उन्होंने अभी, ठीक है। तो आई थिंक 17th of March is the last date of a form filling which is there. Okay, sir. Now, please understand.
Please understand how does this journey works. Companies will register till 18th of March. कंपनीज कब तक रजिस्टर करेगी? 18th तक. मैं कब तक रजिस्टर कर सकता हूं? व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर मी टू रजिस्टर? इज 17th ऑफ मार्च. सर विल आई गेट द लिस्ट ऑफ कंपनीज विच इज कमिंग टू कैंपस? जैसे कि लास्ट टाइम which is there, this is the list of companies which is there. Why do we need a list of companies? That is the first question, sir. You need a list of companies which are going to be coming to a campus. The reason is you have to choose one big center out of the center which is mentioned. So there are 9 big centers which you have to choose. I'll tell you, don't worry in detail. तो आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई मुझे किस सेंटर में बैठना है. डू हैव टू गो फॉर अहमदाबाद, डू हैव टू गो फॉर बैंगलोर, डू हैव टू गो फॉर पुणे, डू हैव टू गो फॉर चेन्नई, डू हैव टू गो फॉर कोयम्बटूर, डू हैव टू गो फॉर Delhi? Which center to choose? That is purely dependent on the list which is there. But the problem which is there here is ICAI many a times will not issue a list during this period. काफी बार होता है कि ICAI इस ड्यूरेशन में लिस्ट इशू नहीं करता है. They are going to be issuing the list after 18th. They are going to be issuing a list after 18th. But I never know. They can issue it tomorrow. They can issue it day after tomorrow. They can issue it after 3 days before the campus, which is there. But if you get to know which company is coming to which center, that also gives an added advantage. But one thing you have to be very clear when you are filling out a form. In ICAI campus, please understand this. ये गुरु बांट दिमाग में डाल दो. In ICAI campus, companies shortlist you. You don't shortlist company. ध्यान से सुने मैंने क्या बोला है. कैंपस में कंपनी तुम्हें चुनेगी, तुम कंपनी को नहीं चुन सकते. बच्चा कहता है सर इन कैंपस ITC इज कमिंग, आई वांट टू गो टू ITC प्लीज टेक माय इंटरव्यू. इल्ले ITC will first shortlist you, then you have to give them a consent. Please understand this. So let's assume that, very simple, this is a list which you have got. After few days ICAI, let's assume that they issue this list. Now bachcha comes and says, hey Disha, take my interview. Disha, I want to come with you. I have chosen Bangalore because you are coming there. Take my interview. Disha bolegi, huh? First I'll shortlist you based on the form you have filled, based on your profile, based on your resume. And after that is done, you are going to be giving an interview. So campus mein companies shortlist you. You don't shortlist a company. Okay, sir. Now let us come to the timelines again, which is there. So the last date for each and every one of you to fill out a form is 17th of March. I would highly recommend you to please fill out early. Reason being, many a times you will be facing a lot of issues like declaration form is not getting submitted, articleship date में कुछ issue आएगा, कुछ ना कुछ issue आपको दिखेगा, which is there. Now after this is done, once you have filled out the form, ICAI will also put a cutoff that company has to fill out the details which is there. And once this is done, ICAI is going to be sharing the database with the companies by 19th of March. लिखा है यहाँ पे, right? ICAI will be sharing the database. Why company ICAI have to share the database? Right? क्या होगा यहाँ पे, जैसे आपने भरा, by 19th of March, ICAI will give a database to all the companies, those who have registered in campus. Now, campus registration and process works in a very nice way. What has happened? ICAI have its rate card. ICAI भी एक अपना rate card निकाल के रखा है. क्या rate card है देखते हैं ICAI का. ICAI says, hey Unilever, hey Dell, hey KPMG, you want to come to my campus? Give me the money based on the day you want to come and based on the center you want to come. It's a pure business. If you want to come early means on a day premiere, you have to pay 7,50,000 to whom? To ICAI. What is a day premiere? Let me tell you, sir. Day premiere means the day which is the first day of a campus. This is a day premiere for a campus. So if a company has to come to a Mumbai location on 6th of April, the company has to pay 7,50,000 rupees to campus ICAI. Oh my God. And company also has to follow one more condition. The condition ICAI puts is, if you are coming on a day premiere on any of the big center means the 9 center. Out of the 9 centers which is there, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Delhi and Pune. These are the 9 centers out of which you are supposed to choose one center for a big center which is there and one center for a small. I'll discuss on the same, don't worry. So out of the companies which are going to be coming here, if you want to come to a day premiere, you have to offer our students a minimum CTC of 20 lakh. कम से कम 20 लाख देना पड़ेगा और तभी आपको डे प्रीमियर में बैठने देंगे.
and that is the condition to come there, and you have to pay us 7.5 lakh rupees if you're coming to bigger centers like Mumbai and Delhi. Sir, you can pay less provided you hire more students. That means minimum 15 students. Can you understand what all conditions are there if company has to come? So let's say if ITC has to come on a day premiere, first thing they have to pay higher. If any company says, sir, I have to come to Mumbai location, I have to pay 7.5 lakh to ICAI, which is there. And parallelly, they will be having a condition of giving a minimum CTC of 20 lakh. But if they are hiring more than 15 candidates, they can pay 17 lakh. The word used here is, guys, CTC. I will be warning you guys. Being a mentor for this journey, I think many of you will be following me the same. Right? The word used here is CTC, which is a cost to company. Right? This includes your fixed plus variable. दोनों include होता है इसमें. तो यहाँ पे दगा होता है काफी बार. CTC 20 लाख दिखेगा, but हो सकता है in hand you might get less than 1 lakh. Why? Lot of companies will put ESOPs. ESOPs vest over 4 years. बन गया part of CTC for the current year. That is the beauty which a lot of companies did in the past. So you should be very, very thorough when you're reading an offer letter, sir. Now, I will ask you a simple question. You can answer me in the chat box also. ICI is saying, if you want to come to Delhi and Mumbai, pay 7.5. If you want to come to Ahmedabad, Kolkata and Jaipur, pay us 2.5 lakh rupees. What the hell is this? मतलब ये क्या बात हुआ? मुंबई दिल्ली आना है तो 7.5 लाख दो, और अहमदाबाद कोलकाता जयपुर आना है डे प्रीमियर पे तो कम पैसा दो. Why the hell is this? Can anybody think of a reason? अरे बताइए क्यों ऐसा होगा? In the chat box, if let's see, can you think or not? क्या हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोच पा रहे हैं? वेरी गुड. प्योर केस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. राइट? अब आपको एक चीज समझ में आ गई. The students, those who are going to be choosing Delhi and Mumbai center, are going to be more as compared to the students choosing Ahmedabad, Kolkata and Jaipur center. मतलब क्राउड ज्यादा रहेगा ना वहां पे. Sir, I am not getting one thing. Why company has to pay higher if they want to come on a day one? The reason is, please understand the reason. Let's say you get selected on 6th of April. Let's say you get selected by one of the company. Let's assume that company has D Shaw. D Shaw come on 6th of April and they select you. Can you sit in upcoming interviews? The answer is no. आप आगे के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते. That is mentioned in the brochure. So why company is paying you higher? First, they want a good candidates. Second, they don't want you to go anywhere. That is why company is paying so much of money. सारा खेल पैसे का है. पैसा दो, बच्चे को लेके जाओ. दम है, ज्यादा सैलरी दो, अच्छा बच्चा लेके जाओ. That's a rule of a market. If you have more money, give more money to our students and take the student. We'll block their ICA portal. They will not be able to sit in second interview. That's the beauty of a campus. Now people are saying, ये तो cheating है. I did not got a chance to sit in other company. That is what it is, bro. So don't worry. That is the part of a journey which is there. Everybody has gone through the same journey. Okay, sir. Next. Now, if you see, this becomes your day one. But this time, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, which is there. Last time what happened in the campus brochure was they had a different dates. मुझे लग रहा है ये डेट शायद चेंज होगी. Right? From my experience, I'm telling you why. Because a day premiere for 2 centers cannot be on the same day. The reason is, let's say ITC is going to Mumbai, right? ITC is going to Mumbai. On a same day, ITC cannot go to Delhi. Because the hiring staff and hiring HR is same. So from my experience, this date might get changed. एक ना एक डेट चेंज होगी, which is there. सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? राइट? मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो पूरे ब्रोशर्स भी पड़े हैं, तो इफ यू वांट आई कैन जस्ट शो यू द सितंबर का ब्रोशर आल्सो, है ना? कोई भी अटेम्प्ट का ब्रोशर ले लेते हैं, which is there. September 25. Let's see this brochure. तो ये ब्रोशर में भी डेट अलग अलग थी, which is there. If you could see it around. देख रहे हो क्या? दिल्ली 2nd, मुंबई 3rd. ये सब लाइन से होता है. तो दैट इज व्हाई इट इज देयर. मुझे लगता है ये चेंज होगा, बट नहीं होगा तो भी ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू आउट. तो व्हाट कैन बी पॉसिबल, मेनी अ टाइम्स आईसीआई कीप ऑन अपडेटिंग द ब्रोशर. लास्ट टाइम भी हुआ था. So you have to again please ensure that you're following my channel. If any update comes related to the campus, I'll upload a short video for you guys so that you don't miss out an important update, sir. Okay, that is the first thing. Now, please understand what is going to be happening now. Now, ICI is going to be sharing this database to the companies on 19th of March.
Whichever companies are going to be coming to a campus, all the companies will get your database. Now the rule says if company have a one vacancy, they can shortlist 10 candidates. The rule is 10x. The rule is 10x. मतलब क्या? Let's say D Shaw is coming to a campus with 8 vacancies. How many candidates they can shortlist for an interview? Only 80 candidates. कहां लिखा है सर? सब कुछ ब्रोशर में लिखा हुआ है, which is there. देखो, an organization can shortlist maximum of 10 times of number of candidates against declared vacancies. I hope it is clear. तो मान लीजिए कि अगर एक वैकेंसी है तो एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट होंगे, 8 वैकेंसी है तो 80 कैंडिडेट होंगे. What does it mean? It means the competition is gonna be there, guys. बच्चा कहता है if I get a shortlisting of a DE show, I'll get selected. No. Now your probability of getting selected is 1/10. प्लीज डोंट लुक मी लाइक दिस. ये मैंने नहीं बनाया. कुछ लोग मुझे गुस्से से देख रहे हैं, बोले ये क्या बात हुआ, ये तो चीटिंग है. अरे मैंने थोड़ी ब्रोशर बनाया है ना, मैंने आईसीए की पॉलिसी बनाई है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ व्हाट इज देयर इन द ब्रोशर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट नाइसली. नाउ आफ्टर द डेटाबेस आईसीए हैव गॉट, what they are going to be doing, they are going to be shortlisting your candidates. Once they shortlist your candidates, what is going to be happening out here? They will be, देखो यहां पे लिखा हुआ है last date for an organization shortlisting by candidate. So ICAI got a data on 19th. From 19th to 21st, they'll shortlist a candidate. So let's assume they have 8 vacancies. They shortlisted 80 candidates. Now, what is the parameter of a shortlisting? Company to company, it will vary. Bacha keh raha, on what basis I'll be shortlisting? Some companies will be shortlisting based on your articleship form. Some companies will be shortlisting based on attempts. Some companies will be shortlisting based on number of partners. Some companies will be shortlisting based on location. Some companies will be shortlisting based on your BCom or grades, which is there. Some companies will be seeing some ranks. Every company has a different parameters of a shortlisting, which is there. And they will be shortlisting you by 19 to 21st, which is there. Okay, sir. Now the most important date for you. When we will be able to see the vacancies, or when we will be able to see which company have shortlisted us, between 22nd to 23rd of March. मतलब कि जो भी कंपनीज कैंपस में आएगी, you will be able to see those companies on your portal by 22nd and 23rd of March. ये कंपनीज आपको पोर्टल पे दिखेगी. कब दिखेगी सर? 22nd and 23rd of March को. Now this date is very very important for you. लिखा है online consent given by the candidate. Now please understand, I am telling you word by word. ये panic होगा आपके बीच में. You will discuss this again among your WhatsApp group. Lot of students will say, bro, I got a shortlisting on 19th. He will start dancing and you will be start scratching my head. Oh my God, I did not got anything. होता है. That is normal. देखो, let's assume one company have shortlisted on 19th. It has uploaded in its portal. You will be able to see on 19th. One student will be able to see on 20th. One student will be able to see on 21st. Don't worry. But the final cutoff date 22 से 23 तारीख तक आपको सबको दिखना चालू हो जाएगी. तो हो सकता है some companies और some students will start seeing the shortlisting on 19th. तो don't take stress कि मेरे को तो कुछ आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं. हे भगवान, आपको तो नारियल चढ़ाए थे, क्या हुआ नारियल का? अरे नहीं बेटा, आएगा. एक्चुअल शॉर्टलिस्टिंग डेट है 22 और 23. कभी कभी कंपनीज जल्दी शॉर्टलिस्ट कर लेती है, इसलिए आपको जल्दी दिखता है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इसमें पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे. व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और भलता ही कुछ तो अलग चलता है सबके ग्रुप में. भाई द फाइनल शॉर्टलिस्टिंग डेट वेयर यू विल बी एबल टू गिव योर कंसेंट. कंसेंट मतलब सहमति. नाउ हियर यू आर सपोज टू गिव योर कंसेंट ऑन 22nd and 23rd of March. Now listen me out very very carefully. What does it says? It is the first round of consent. पहला राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग है ये. Okay. Now, again, there will be one more shortlisting round for the same campus, which companies are going to be doing on 24th and 25th. Candidates will be able to see the second round of a shortlisting by 26th of March. Sir, ये second round क्या है? ये चक्कर क्या है? नहीं समझ में आया. Now let me explain you one by one. पहले dates लिख लेंगे, which is there. तो पहला shortlisting आपको दिखेगा 22 और 23 मार्च को. This is the first shortlisting. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग गाइस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग.
Second shortlisting I'll be able to see on my portal on 26th of March. 26th of March. इधर मुझे दिखेगा second shortlisting. Now please listen me out very carefully, word by word. The total number of consent which you can give, including first and second shortlisting, should sum to 4. नहीं समझा सर? सर टोटल कंसेंट आप कंपनीज को दे सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड शॉर्टलिस्टिंग मिला के 4 को. Now let me explain you word by word. Let's assume that in a first shortlisting you got some good companies on your portal. अच्छी अच्छी कंपनीज आपको दिखने लगी. Let's say you got to see ICICI Bank, KPMG, Deloitte, no, Dell, Deloitte, then you got ITC, then you got Axis Bank. एक्सिस बैंक, ये सब आपको शॉर्टलिस्टिंग दिख रही थी व्हेन यू गॉट अ फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग. कब? ऑन 22nd and 23rd of March. सर टू हाउ मेनी कंपनीज आई कैन गिव अ कंसेंट ऑन फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग? 4. सेकंड में टोटल शुड बी 4. ओके सर. So let's assume that if you give a consent to 4 companies here, 1, 2, 3, 4. Now, how many companies I will be able to give a consent on second shortlisting? Will be 0. क्यों 0 सर? Because the total should equal to be 4. फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग और सेकंड शॉर्टलिस्टिंग मिला के मुझे 4 कंपनीज को कंसेंट देना है. सर लेट अस अज्यूम दैट आई गिव अ कंसेंट टू ओनली 3 कंपनीज. नाउ I gave to ICICI Bank, KPMG and Dell. So I gave a 3 companies shortlisting here. How many companies I can give in the second shortlisting? 1. I hope it is clear. अब बच्चा बोलेगा सर I gave a consent to 3 companies here in my shortlisting and I did not got any companies on a second shortlisting. Possible? Possible. हो सकता है ना सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में एक भी नई कंपनी आपके पास नहीं आई. तो सर कैन आई गिव अ कंसेंट टू द कंपनीज व्हिच आर रिजेक्टेड इट अर्लियर? द आंसर इज नो. एक बार किसी को मना कर दिया तो वो दोबारा नहीं आता. बस लाइफ का रूल भी वही है. सर तो इफ आई गेट अ सर दिस इज चीटिंग, बट ये तो गलत है सर. I gave a consent to ICICI Bank, KPMG and Dell and I was praying to the God, hey God, give me good companies, day premier companies. But God did not listen me. He did not give anything. But now I feel that I should give a consent to the companies which were there in the first shortlisting. So I should have given 4 interviews. Gaya. I hope it is clear to you. Sir. So if I give a consent to 2 companies here, can I give a consent to 2 companies here? The answer is yes. If I give a consent to 1 company here, can I give a consent to 3 companies here? The answer is yes. If I give a consent to 0 company here, can I give a consent to 4 companies here? The answer is yes. The total should be 4. Now please understand, this is for a big campus. ये big campus का 4 का है. Small campus again 4. तो वो अलग ही है पूरा. There are 2 separate campus. Please understand, ICAI conducts 2 campus for all of you. One is big campus, which is now in the month of April. One is small campus. Small campus कब होगा? The date has been mentioned here. ये देखो यहाँ पे मई में होगा वो. तो that is gonna be there. तो इसका भी 4 का पैरामीटर रहेगा, इसका भी 4 का पैरामीटर है. दोनों अलग अलग है. Both are separate. Okay, sir. First, everybody tell me in the chat box, did everybody understood the concept of first shortlisting and second shortlisting and total number of counts? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू गाइस. क्लियर के ऑल क्लियर? सर सब कुछ क्लियर है. डिडंट अंडरस्टूड 0. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. Yes, I'll explain you again. Very good. I'll take 2-3 permutation combination so that you understand it again. Okay, ध्यान से देखेंगे आप. I'll take more complex case which you will have a. इसका डाउट बहुत आता है आपके पास, फिर आप गड़बड़ करते हो and then you will be taking so many stress. सर मान लीजिए you got only 3 companies as a shortlisting on your portal on 22nd of March. मैं भगवान से प्रे करूंगा ऐसा ना हो. मैं तो चाहता हूं सबका बढ़िया से जॉब लग जाए, कैंपस से मजा आ जाएगा. But let's assume that you got only 3 companies shortlisting in the campus. You said that no, I will get more companies, so you gave a consent only to 2 companies here. In second round of a shortlisting, you did not got any company as a shortlisting.
मिली ही नहीं, तो कैन आई गिव अ कंसेंट टू आईसीआईसीआई बैंक इन द सेकंड शॉर्टलिस्टिंग? द आंसर इज नो। तो टोटल मैं अब 2 ही इंटरव्यूज दे पाऊंगा, क्यों? बिकॉज आई हैव गिवन अ कंसेंट टू ओनली 2 कंपनीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव गिवन अ कंसेंट टू 0 कंपनी हियर। बोले नहीं, तीनों बेकार है, तीनों नहीं चाहिए। एंड इन अ सेकेंड राउंड ऑफ अ शॉर्टलिस्टिंग यू गॉट 8 कंपनीज एज अ शॉर्टलिस्टिंग। भगवान ने छप्पड़ फाड़ के आपको 8 कंपनियां दे दी सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग में। अब कितने कंपनीज को इंटरव्यू दे सकते हैं गाइस? कोई बता सकता है? अब कितने कंपनी, हाउ मेनी कंपनीज यू कैन गिव एन इंटरव्यू फॉर? क्या बात है, सारे के सारे मुझे टॉपर मिले हैं, 4। टोटल 4 रहेगा। चाहे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, 4 ही दे पाओगे, बात खत्म, पैसा हजम। आई होप दिस इज क्लियर टू। ओके सर। सर नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, this shortlisting is dependent on first most important parameter, that is your location of shortlisting। कि आप लोकेशन क्या चूज करते हो, इस पे डिपेंडेंट है। दैट इज वन पैरामीटर। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन योर फॉर्म विच यू आर गोना बी फिलिंग। कि आपने फॉर्म कैसा भरा है, राइट? ऑफ कोर्स वी आर गोना बी हैविंग अ सेपरेट सेशन ऑन हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म विच इज देयर, राइट? कि कैसे डिटेल्स भरना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बेसिक डिटेल्स एंड स्टफ। थर्ड, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर रिज्यूम, राइट? ये शॉर्टलिस्टिंग डिपेंड करता है रिज्यूम पे। सर, आर वी सपोज टू पुट अ रिज्यूमे व्हेन यू आर गोना बी अपलोडिंग द सेम? द आंसर इज यस। यू आर सपोज टू अपलोड योर रिज्यूमे व्हेन यू आर गोना बी अपलोडिंग एंड फिलिंग आउट अ फॉर्म। ये 3 मेजर पैरामीटर होते हैं विच इज देयर। एंड ऑफ कोर्स फॉर्म में भी देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स ऑफ अ शॉर्टलिस्टिंग। जैसे कि अटेम्प्ट विल बी वन पैरामीटर, articleship form name will be a parameter, then your type of work which you have done is a parameter, your location is a parameter. If it is a PSU, they will shortlist based on your mark of BCom also, they'll say that कि आपको CA में 60% से above है तो ही हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। ऐसा भी होता है, मेरे तरफ मत देखिए प्लीज, मेरी कंपनीज नहीं है। तो ये PSUs के पैरामीटर और फंडे होते हैं कि इफ यू आर नॉट स्कोरिंग अबव 60% इन CA, थैंक यू गाइस, बाय बाय, वी डोंट कंसिडर यू। अरे भाई, CA हूं मैं, फिर भी बीकॉम बीकॉम उनको मार्क गिनते हैं, पता नहीं, पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो एवरी कंपनी विल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अ शॉर्टलिस्टिंग। तो रिक्वेस्ट यू प्लीज ये फॉर्म इज्जत से भरना। विल हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द सेम कि हाउ डू यू फिल आउट अ फॉर्म। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंपस वाज दिस, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट सर। ओके सर, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। आफ्टर दिस शॉर्टलिस्टिंग हैज बीन डन, एक बार ये शॉर्टलिस्टिंग हो गई, now what will happen? Now what will happen? Lot of companies will be conducting your aptitude test, psychometric test, PPT, and in fact you will get a meeting link for a group discussions also. Last time what happened in the campus was lot of companies conducted the virtual GD and candidates were not prepared for the same। कुछ लोग एकदम चौड़ में थे। क्यों चौड़ में थे पता है? बच्चा बोलता है सर कैंपस इज फिजिकल 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 फिजिकल, क्या बोल रहा है? ये लास्ट टाइम के कैंपस का ये मैं लिस्ट दिखाता हूं आपको। बाय द वे दिस लिस्ट यू विल बी एबल टू गेट इट आउट ऑन माय यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। जैसे ये वीडियो खत्म होगा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी। क्या है सर ये फाइल? आपके मजेदार और काम की फाइल है ये, बाय द वे, राइट? दिस इज अ लिस्ट ऑफ कंपनीज विच केम इन द लास्ट कैंपस। 63rd कैंपस था गाइस। तो ये फाइल अभी आईसीए कैंपस पे नहीं है, तो मेरे पास है, डोंट वरी, बीइंग अ ब्रिक ब्रदर आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ये फाइल मैं सबको दे दूंगा। कहां मिलेगा दोस्त? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो YouTube पे जाना, यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। नाउ आई हैव नॉट अपलोडेड बट आई विल अपलोड इट लेटर। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कुछ कंपनीज वर्चुअल इंटरव्यू भी ले लेगी। ऑल ऑफ द कंपनीज सडनली दे विल बी कंडक्टिंग अ वर्चुअल इंटरव्यू व्हिच इज देयर, एंड द प्लेस कैन बी डिफरेंट, सेंटर कैन बी डिफरेंट। बच्चा कहता है सर आउट ऑफ द 9 सेंटर आई हैव टू चूज वन बिग सेंटर? द आंसर इज यस। तो देयर आर 9 डिफरेंट सेंटर्स, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। बच्चा बोलता है सिलेक्टेड अहमदाबाद एज अ सेंटर, व्हाट विल बी माय प्लेस ऑफ पोस्टिंग? कोई बात नहीं, आपका तो सूरत है, बट इस केस में पुणे है। तो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इफ यू चूज अहमदाबाद एज अ सेंटर यू कैन ऑल्सो गेट अ डिफरेंट लोकेशन। नो वन हैज द आंसर फॉर द सेम, इट इज कंपनी सेंट्रिक। बट ज्यादातर अगर आप देख रहे हैं, इफ यू सी, देखो, इफ यू सी द अहमदाबाद वन, प्लीज प्लीज सी दिस केयरफुली। अहमदाबाद है तो सूरत है, अहमदाबाद है तो अहमदाबाद है, अहमदाबाद है तो अहमदाबाद है, अहमदाबाद है तो अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद है ना? राइट, विच इज देयर। तो एक चीज समझ में आई, अगर मैं सेंटर अहमदाबाद चूज करूंगा तो मेजरली आई बी वर्किंग ऑन द अहमदाबाद लोकेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम? 60 to 80% डिपेंड ऑन अ कंपनी।
Now let's see for a Bangalore. I'm just giving you this idea. Why? Because now the list is not yet out. जीवन की मजेदार बात क्या है पता है आपको? मजेदार बात यह है कि लिस्ट आपकी आ सकती है या आएगी 18 के बाद। आह, आईसीएल लिस्ट देगा कंपनी वाइज 18 के बाद। आ गई पहले तो बेस्ट है, लाइफ का सबसे अच्छा अचीवमेंट इफ द लिस्ट कम्स अर्ली। बट द लास्ट डे ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ 18th, योर रजिस्ट्रेशन इज 17th। अब मान लीजिए लिस्ट नहीं आई तो क्या करोगे? यू हैव टू चूज द सेंटर, नो ब्रो। तो आई एम टेलिंग यू वन पैरामीटर ऑफ डिसाइडिंग अ सेंटर। ओ महाराज, एक पैरामीटर डिसाइडिंग ऑफ अ सेंटर क्या है कि ब्रो, यू गॉट टू सी दिस कि द मेजर कंपटीशन एंड द पीपल आर गोना बी मोर इन दिल्ली एंड मुंबई, देन सेकंड विल बी बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे, एंड देन थर्ड विल बी अहमदाबाद, कोलकाता एंड जयपुर। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, मैं अपने अनुभव से बता देता हूं, ठीक है। लेट्स अज्यूम अगर 10,000 पीपल आर सिटिंग फॉर अ कैंपस, बिकॉज आई एम बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर नाउ 6 years, मुझे सब पता है कि दिल्ली में मोटा मोटी 25% बच्चे भर बैठेंगे, मुंबई विल बी अराउंड 25%, बैंगलोर विल बी अराउंड 20%, चेन्नई विल बी समवेयर अराउंड 10 to 15%, which is there. Hyderabad again 10 to 15%. Pune will be 10 to 15%, and remaining will go here. That is what my experience is. ये प्लेस परसेंटेज ऑफ अलोकेशन है स्टूडेंट्स का बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब ये मोस्टली सेम रहता है, रीजन बीइंग लिस्ट ऑफ कंपनीज एंड द सिटीज विच पीपल प्रेफर फॉर, राइट। जैसे कि कोलकाता क्यों कम है सर? बिकॉज कंपनीज आर लेस। अहमदाबाद क्यों कम है? बिकॉज द कंपनीज आर लेस। जयपुर क्यों कम है? बिकॉज द कंपनीज आर लेस। You also know this. The people from Ahmedabad, Kolkata, and Jaipur knows it well. So they themselves are looking to move to a different city. But if you see the trend of last companies which was there, कहाँ चली गई? हाँ. If you see the trend of a companies which is coming to Bangalore, I'm the first parameter of telling you understanding and deciding a campus is this. Second parameter is you run through the list of a previous campus, which I'll be sharing in the YouTube description. I'll be highly recommending you to run through this list. See कि देखो भाई, बैंगलोर में अगर कोई कंपनी आई थी तो बच्चा बोलता है कि इफ आई चूज अ बैंगलोर सेंटर आई गेट अ जॉब इन बैंगलोर। नो, इफ यू चूज आईटीसी, लेट्स अज्यूम आईटीसी चूजेस यू, दे विल प्लॉट यू एनीवेयर इन इंडिया। And when they say this anywhere in India, this becomes a next interview question for you. Fixed interview question. पता है क्या आएगा? Which is your preferred location? And that time you say, sir, I am okay to choose only. I am looking for Mumbai. वो select नहीं करेगा, आपको हकाल देंगे, बोलेंगे कि भाई this guy is not open to relocation. Then interview, if it is clearly written here in the brochure, anywhere in India, what you're supposed to say? Sir, I am ready to work anywhere in India. Relocation is not a problem for me. ओके, तो आप देखिए जैसे आप बैंगलोर का कंपनी है तो मेजरली यू विल सी द बैंगलोर एज अ पार्ट ऑफ योर सेंटर विच इज देयर। देख रहे हो क्या? विच इज देयर। अगर बैंगलोर के कोई कंपनी आ रही है तो मेजरली यू विल बी एबल टू सी द बैंगलोर विच इज देयर, नो। तो ये चीज आप नोटिस करोगे तो आई विल हाईली रिकमेंड एवरीबडी टू रन थ्रू दिस ब्रोशर विच इज देयर। सर 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 सर, ये तो कंपनी वाइज सेंटर वाइज लिस्ट मिल गई, प्लस पैरेलली कैन यू गिव द लिस्ट ऑफ कंपनी विच कम्स टू कैंपस? इट इज ऑल्सो देयर इन द ब्रोशर इटसेल्फ। आप ही के पास है। कहाँ है? ये देखो यहाँ पे डली हुई है, यहाँ पे डली हुई है। विच ऑल कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द कैंपस इन द पास्ट। ओके सर, डन डन डन। सो फार सो गुड गाइस, अभी तक की चीजें सबको समझ में आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू सो फार? हेलो गाइस, यस और नो इन द चैट, यस और नो इन द चैट। ऑल एग्जाम्शंस इन जनवरी 26। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू सर, सब कुछ क्लियर है सर, बहुत बहुत बढ़िया। सर आई हैव वन डाउट। व्हाट डाउट यू हैव? सर, I have to upload a resume in the ICAI campus. Although ICAI campus फॉर्म कैसे भरना है उस पर मैं अलग से कल एक वीडियो डाल दूंगा, कल या परसों, डोंट वरी ऑन द सेम विच इज देयर सर, बट आई हैव टू अपलोड अ रेज्यूमे इन द ICAI campus, है ना? How do I prepare a resume which is there? Don't worry, we have done a great work for each and every one of you which is there. And you can check our resume builder. This is something which you have created, and of course you can create and prepare your CV free of cost here. राइट? क्यों? क्योंकि 50 कॉइन्स विल गिव यू व्हेन यू क्रिएट योर अकाउंट, 50 कॉइन्स विल गिव यू वंस यू कंप्लीट योर अकाउंट। तो दैट इज अ ब्यूटी विच यू हैव बिल्ड आउट फॉर यू गाइस। एंड इनफैक्ट आप यहाँ से जैसे आप प्रोफाइल कंप्लीट करोगे आपको 50 कॉइन तुरंत मिल जाएंगे। ये पूरा एकदम डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे ट्रैक कर रहे हो, कितना आपका इंटरव्यू प्रेफरेंस है,
राइट, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया आपने, टाइपिंग टेस्ट दो, तो एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड हियर एंड दे विल बी टेलिंग आउट हियर। तो कैन क्रिएट योर रेज्यूमे बाय क्रिएटिंग योर रेज्यूमे विच इज देयर, जो भी डोमेन का जाना है उसका आप बना लीजिए, राइट। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट यू आर रिव्यूइंग योर रेज्यूमे हियर विच इज देयर। अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है तो वो जेडी डाल दो, कोई आपका पुराना रेज्यूमे तो यहाँ डाल दो, एंड आफ्टर दैट देन स्टार्ट बिल्डिंग। देखो, अगर आपको नहीं भी बनाना है तो एटलीस्ट डाल के देख लो इस टूल में कैसा दिख रहा है। एंड बाय द नेक्स्ट वीक वी आर गोना बी लॉन्चिंग 15 न्यू टेम्पलेट्स विच इज देयर। तो अलग अलग 15 नए टेम्पलेट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू सी इट आउट कि दैट इज देयर, एंड यू कैन चूज एनी ऑफ द टाइप ऑफ अ टेम्पलेट विच एवर यू फील लाइक इज गुड फॉर यू, यू कैन जस्ट चूज फॉर द सेम। ठीक है, इसको लेआउट चेंज करना है तो लेआउट चेंज कर लेना। अगर आप यूज कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। आई हैव टोल्ड हाउ टू लिवरेज दिस बिल्डर विच इज देयर नाइसली, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज देयर। ओके सर, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, resume which is going to be uploaded. Okay, sir, second big question when I'm going to be preparing and filling out a form, sir, do I need a membership number to fill out a form? मैंने तो membership ली ही नहीं। सर पहले बताओ membership लूं कि नहीं लूं, it's up to you, but I would recommend लेना है ले लो, नहीं लेना है तो you can take it after April, because a lot of people are saying that कि we want to save our money and if I buy it now again I have to pay the in April which is there। तो अगर आपका ये concern है तो I would recommend आप बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। Will anyone or any of the company will ask for a membership to me in the campus? The answer is no, unless and until it is PWC. PWC मांगता है सिर्फ, which is there. But again, you can say that, sir, I've applied for a membership or I'll be applying soon. And by the time your anyways things will be coming out, so you can buy it out or you can take your membership. Membership से आपका convocation date बस effect होता है, which is there. Right? तो अगर आपको चाहिए कि मेरे दोस्तों के साथ चाहिए तो सब साथ में membership लेना, because it is going to be a cut off date. अगर आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ कन्वोकेशन क्या है, वो टोपी उड़ाने वाला था ना, काला ब्लेजर, हाँ टोपी उड़ाएंगे, हाँ वो कन्वोकेशन है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ओरिएंटेशन एंड कन्वोकेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इज अ प्रोग्राम which is going to be happening before a campus starts, right? You have to choose one city for a orientation which is there, where you are going to be going, you're going to be having a good food in a 5-star hotel most probably, right, which is there, and you're going to be meeting some people out and good speakers are going to be there. So that is going to be happening in a orientation, राइट। तो वो चीज होगा ओरिएंटेशन पे। अगेन यू विल गेट द लिस्ट व्हिच इज देयर, वेयर इज द ओरिएंटेशन हैपनिंग इन, वेयर इज द कैंपस हैपनिंग इन, व्हिच इज देयर। नाउ ऑफ कोर्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस कैंपस इज अ फिजिकल कैंपस, सो यू हैव टू ट्रैवल टू द रिस्पेक्टिव सिटी एंड प्लेस व्हिच इज देयर। नंबर 2, सर सर कोई पैसा वैसा देना है क्या कैंपस भरने के लिए, कि फ्री में करेगा आईसीआई हमारे लिए? नहीं बेटा, यू हैव टू पे ओनली 1500 रुपीज टू आईसीआई, नॉट टू मी। 1500 रुपया देना है, 150 नहीं रहे, 150 के आगे एक जीरो, हाँ 1500 रुपए। तो कंपनी से 7.5 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख जो भी ले रहे हैं उनसे ले रहे हैं, और आपसे 1500 रुपए ले रहे हैं। मेरे तरफ मत देखिए, आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आईसीआई को दे रहे हैं। सर क्या 1500 रुपए भरेंगे तो क्या गारंटीड जॉब मिलेगी? कहीं नहीं लिखा है, राइट। बट ऑफकोर्स दैट इज गोना बी एन एडेड एडवांटेज टू यू, राइट, ऑफकोर्स विच इज देयर इफ यू पार्टिसिपेट ऑन द कैंपस। Okay, sir. So if I don't take a membership, what I have to do? Don't worry, you have to just sign one small declaration form, which is gonna be there in the portal itself. ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है if you don't have a membership. ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लिया है स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, which is there. Okay, सर अब 2-3 चीजें हम लोग इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, what all issues you'll be facing on the same, and then I'll open the forum for Q&A, which is there. Sir, is it compulsory to attend there? A virtual option is there. So this time they have incorporated a virtual option for a campus orientation. So let's see. अभी आपको dates वगैरह आ जाएगा, right? तो don't need to worry as such. सर चलो एक बार ब्रोशर रन थ्रू कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है डिटेल्स, क्या क्या है which is there. And if you have any queries, then we'll of course be happy to take the same. So you understood this. ये तो ICAI के बारे में they have written the same. This is a committee of ICAI guys, right? तो अर्पित काबरा जी is a convener for this campus placement team and Rajesh Sharma is the deputy convener. तो ये these people are central council members. These are CCM. तो every CCM has a committee. तो अर्पित sir is the chairman for this committee for this year. ठीक है, every year the chairman get change. ठीक है, तो that is first thing. Then I told you about this. This is done. Every company can participate in the campus. ये बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए फॉर द कंपनीज इफ दे हैव टू पे मनी। आप लोग इधर पैसा मत डाल देना रे, है ना, इधर पैसा डाल देंगे, ठीक है, दैट इज देयर। देन दिस इज समथिंग आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड आउट। अच्छा, वन मोर थिंग, बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट इज द मिनिमम सीटीसी आईसीआई इज रिकमेंडिंग अ कंपनीज। द मिनिमम सीटीसी आईसीआई कोटिंग इज 9 लाख रुपीज, व्हिच यू कुड सी इट आउट हियर,
राइट, दे हैव क्लियरली मेंशन इन द कैंपस ब्रोशर कि 9 लाख कम से कम देना पड़ेगा, एंड दैट इज अ सीटीसी व्हिच इज देयर. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोना बी कमिंग टू अ स्मॉल कैंपस, 7.2 lakh is 7.2 lakh is the minimum CTC they are quoting there. Okay, sir, that is something they have quoted here. After this done, 10 time vacancies I've already covered here. Key number of companies can be hired is a 10 time, which is there. Then set the deadline of portal. हाँ, one more thing. बच्चा पूछता है कि सर let's assume that if I get selected in the campus portal. Now assume that कि सर आप ये ध्यान से सुनेंगे. You will be having your virtual interview rounds, GD group discussion between these dates, which is there. After this is done, you will have your physical campus between these dates depending on the center you choose. राइट, जो भी आप सेंटर चूज करोगे यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कंपनी. ऐसे आपको लिस्ट दिख जाएगा ऑन योर पोर्टल. कहाँ चला गया फिर से, हाँ, ऐसे दिख जाएगा. लेट्स अज्यूम दैट द इंडियन होटल्स हैव सिलेक्टेड यू, तो यू विल हैव यू अपडेटेड इन योर पोर्टल 5th of December यू हैव टू बी देयर. ठीक है, तो ऐसा आपको पोर्टल पे दिख जाएगा विच डेट विच कंपनी हैव शॉर्टलिस्टेड यू. यू विल बी एबल टू सी द सेम, यू विल बी एबल टू सी द ब्रेकअप एंड एवरीथिंग ऑफ द सेम इन योर पोर्टल इटसेल्फ. वो सब दिख जाएगा. नाउ वन मोर क्वेश्चन सर. Sir, I have a doubt. Let's assume that if I get selected in big center, can I sit for a small center? The answer is no. एक बार आपने कंसेंट दे दिया, वंस यू हैव गिवन अ कंसेंट इन द बिग सेंटर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्मॉल सेंटर. फर्स्ट रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सबको विनती है. क्या विनती है सर? I will be uploading multiple videos for a campus which is there. I will be happy if you follow every video which is there. Number two, even if you don't follow, at least listen one thing. Let's assume that you got a list of companies shortlisted here on 22nd. मान लो आपको 4 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है. And once you have given a consent, the blue tick will appear here. How do you ensure that the consent is recorded? Log in, log out, check whether the blue tick is visible. Then again log in, log out, then again check blue tick is visible. अगर blue tick नहीं आ रहा है मतलब consent is not recorded. Number two, after your consent is recorded, I will highly recommend you take a screenshot. प्लीज लेके रख लेना, फिर बाद में आप बीटी खाते हो. स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट? स्क्रीनशॉट ऑफ द कंपनीज विच हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, एंड उसके अंदर यू विल गेट वन आई बटन. उसको क्लिक करना, वेयर यू विल गेट अ सीटीसी डिटेल. Why you have to click a picture for the same? Because many a times companies might give you something else what they have promised in the screen. स्क्रीन में बोलेंगे 15 लाख दे रहे हैं, ऑफर लेटर दिखेगा 12 लाख का. So that time you can say that, ma'am, on the portal it was showing 15 lakh, now you are getting 12 lakh. You have to understand and ask the reason for the same. I hope this is clear. यहाँ पे आप लोग काफी बार गलती कर बैठते हो, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, भले इंसान की तरह ले लेना. बिकॉज दिक्कत क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं. प्रॉब्लम इज बिकॉज वंस यू गेट सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनी, आईसीआई विल ब्लॉक योर पोर्टल. तो मान लीजिए आप आईसीआईसी बैंक में सिलेक्ट हो गए या केपीएमजी में सिलेक्ट हो गए, एंड आफ्टर यू साइन अ डिक्लेरेशन, एट द एंड यू हैव टू साइन अ डिक्लेरेशन कि आई एम ज्वाइनिंग दिस कंपनी. वंस यू साइन अ डिक्लेरेशन, पोर्टल ब्लॉक्स. फिर सब खत्म, फिर तुम सर पटको, हाथ पटको, कुछ भी पटको, वो पोर्टल नहीं खुलेगा. तो बेटर यू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर सेफ्टी कि देखो भाई, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट, दिस इज व्हाट द कंपनी हैव सिलेक्टेड मी. कीप ऑन टेकिंग अ स्क्रीनशॉट व्हिच इज देयर. ओके सर. Now, the company, once you get selected, once you sign a declaration, you are supposed to get an offer letter within 15 days. That is recommended to a company. The company has to release your offer letter within 15 days once you get selected, which is there. Limit on shortlisting, I've explained you. I was saying you, right? Every candidate can give a consent maximum in 4 recruitment entities, irrespective of number of recruitment entities shortlisted him or her. मैं अपने मन से नहीं बता रहा था, ये ब्रोशर में लिखा है, मैं प्रूव करके भी दिखा दिया. नहीं तो कोई बोलेगा सर आपने मनगढ़ंत कहानियां बना रही. नहीं बेटा, ये ब्रोशर में लिखा है. ओके सर. Sir, what will be a timing of an interview? The timing of an interview will be 9:30 to 6 p.m. That is going to be a timing which is there. Sometimes it gets late. But the good thing is that if you are going to be going for a campus interviews, you will get your breakfast. Hi. Tea, ha. Coffee, वाह. And lunch. वाह. हो गए 1500 वसूल. तो कंपनीज मिली ना मिली, खाना जरूर मिलेगा. एंड पीपल बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, दिल्ली वालों का तो हर साल 5 स्टार ही मिलता है भाई. मुझे बड़ा जेलस फील होता है दिल्ली सेंटर में. मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू चूज अ दिल्ली बिकॉज यू गेट अ 5 स्टार. अब बच्चा बोलेगा सर आई विल गो फॉर अ दिल्ली सेंटर नाउ. बट एवरी ईयर आई सी दिल्ली वालों को तो भाई क्या होटल देते हैं यार. पिछली बार तो आई थिंक पुलमेन थी और उसके बाद मेरियट थी. मतलब ऐसे उनका सेंटर देख के ना हमको 2 मिनट जेलस फील होती है कि यार एक बार के लिए दिल्ली चले जाता, 5 स्टार का खाना तो मिल जाता. इट इज देयर, बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट दैट इज देयर. तो फ्यू सेंटर्स हैव अ वेरी गुड stuff, but ठीक है, anyways that's not a point of a consideration. I just told you which is there which you will feel out in some days.
ठीक है, so that is there. This is statistics of the companies who have got placed, list of companies who have been there, and at the end they have given some numbers also for their secretary and the chairman, which is there. ठीक है, तो ब्रोशर के एंड में दिए हुए हैं. ड्रेस कोड क्या रहेगा फॉर द कैंपस? ऑफ कोर्स फॉर्मल्स, राइट? नो नीड टू एक्सप्लेन, बट दे आर रिकमेंडेड दैट formal blazer, highly recommended you carry a blazer, tie and the polished shoes, which is there, right? Girls के लिए they have not mentioned the tie, but of course you can see the dress code which has been mentioned here. Okay sir, then ये हो गया. This I've told you about this website, right? cajobs@ici.in. If you face any issue, you'll be paying 1,500 rupees, which is there for the campus. Acha, eligibility, I've covered it out, just revising the same. Everybody is eligible, those who have passed both the groups. इधर यहाँ पे drafting issue है, but ignore that. Even if you have cleared one group here and earlier you have cleared one more group, then still you are eligible for the same, which is there. Then if you are passed out of a November and because of any of the reason you did not sit for a last campus, you are eligible to sit for this campus. Just ensure that you put a N after your roll number. If you're facing an issue, just ensure that you write a mail there on this email ID. So these are the multiple centers out of which you have to choose one center, and some second center is also there. Sir, I have a doubt. What doubt you have? So let's assume that I fill out a form for a first center. हो सकता है I did not got shortlisted in any of the companies now. Can I change my center for a second campus? The small campus? The answer is yes. They have clearly mentioned the same. ये ध्यान से पढ़ेंगे. अगर आपको सेंटर चेंज करना है किसका? स्मॉल कैंपस का बाद में. ये तभी इतना relevant नहीं है, but again I'll upload a new video when the small campus will start. But just telling out, candidate who wish to update their email address or make any changes in their profile must send email at this with the correct information before the database is shared. Please ensure that the request is made in a timely manner to avoid a miscommunication before 30th of April. Why 30th of April? Because second campus will start in the month of May. तो उसके पहले आपको भेज देना है, which is there. Okay. So that has been mentioned. The same thing has been mentioned here. देखा ना कि ensure that your database is considered for small campus, you can mail it to this. So you can change your small center later. Abhi, you have to choose both the center, big center and the small center, which is there. I'll upload a dedicated video on how to fill out a form tomorrow or day after tomorrow. Don't worry on the same. The 10 shortlisting wala I have already covered, right? Companies have to totally shortlist 10 into number of vacancies they have. ठीक है, और कुछ बचा है क्या? कैन ओनली गिव अ कंसेंट टू द कंपनी शॉर्टलिस्टेड राउंड. इट इज मैंडेटरी टू अटेंड. हाँ, तो इफ यू आर गिविंग अ कंसेंट, यू आर सपोज टू अटेंड दैट इंटरव्यू व्हिच इज देयर. द इंटरव्यूज आर गोना बी ऑन अ फिजिकल मोड. अच्छा, वन मोर थिंग. हाँ, काफी बार आप पेमेंट करोगे किसको? आईसीआई को. तो लेट्स अज्यूम दैट यू हैव पेड 1500. इट इज नॉट विजिबल ऑन अ पोर्टल. ये होगा आईसीआई वेबसाइट ही आपको अलग विल नॉट बी एबल टू सी इट आउट. डोंट वरी. व्हाट यू हैव टू डू? लॉग इन, लॉग आउट एंड चेक द सेम. And what you have to do, you have to delete the cookies. The beauty is when you will make a payment of 1500, you will not get anything. मतलब कोई रिसीट नहीं आएगी, कोई पर्ची नहीं आएगी, सिर्फ बैंक से ट्विंग की आवाज आएगी और पैसा कट जाएगा. Then you will come to me saying, sir, no receipt, no payment. Should I have filled a form or not? कोई बात नहीं, आपके ऊपर पेड दिखाएगा. You will be able to see the same. But still, if you are getting any issue, right, which is there, you should connect to an ICAI. अगर बहुत ही गंदा फंस गए तो make a payment twice. And don't worry, if you make a payment twice, you will get your money back. कब मिलेगा सर? जुलाई 2026 में. ये क्या हंसते? मिलेगा ना, जुलाई में मिलेगा. बट ठीक है, तो इफ यू मेक अ पेमेंट ट्वाइस, यू विल गेट योर मनी इन जुलाई 2026. सिर्फ 3 महीने बाद, 4 महीने बाद. ठीक है. अच्छा सर, व्हाट इज दिस पेनल्टी? दिस पेनल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स अज्यूम दैट यू सिलेक्टेड इन द कैंपस, यू गिव योर कंसेंट. आप सिलेक्ट हो गए. लेट्स अज्यूम दैट यू सिलेक्टेड इन केपीएमजी. You have to sign a declaration after you selected, right? So you signed a declaration, and after signing a declaration, if you don't join, you have to pay a penalty of 5,000 to whom? To ICAI. ये penalty उन्होंने लगाया. क्यों? Because you're taking a job of someone else, no? So that is why they are putting a penalty on you guys. ठीक है, तो ये एक छोटा सा penalty है which they have mentioned on their brochure. ठीक है, तो this is how your entire campus placements will flow all together, right? For the journey for campus placements. I would highly recommend you guys, right? Campus is a added advantage for all of you, those who are sitting here. But I would also recommend you to please start preparing well and also ensure that you are giving an interviews beforehand and you're prepared well. ठीक है, प्रिपरेशन के साथ ही जाना, बगैर प्रिपरेशन के मत जाना गाइस. ठीक है. Before I open the forum for a doubt, right? There are few of the doubts. I know there are a lot of people have a doubts. But before that, let me just tell you few things which is there.
Right. So, guys, we are working for you guys for a very long. That means for the last 6 years, we have been into this industry for interview training and placement. हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, interview training and placements. So we have planned a lot of events for you. Just like today we had an event for campus placements. Tomorrow we have a very interesting event on networking for all the January 26 chartered accountants. So those who want to come tomorrow, you can join us, which is there. This is going to be for 1.5 hour, which is in afternoon. Right, don't worry. India match uske baad hai. India match I think is going to be starting at 5. I know you are excited for the same. Hopefully India wins a trophy. मजा आ जाएगा फिर तो. So that is there, but we have a good networking for all the young chartered accountants like you. Then we have a pre-kickoff session for our next batch, which is 93rd batch. By the way, 92nd batch is starting on Monday morning. That is on 9th of March. So if you're interested, you can join for the same. Then we have a pre-placement talk with a Wipro. So Wipro ka GFL ka hiring is out. The leadership of a Wipro is going to be joining us. They are going to be briefing you out for what role they are hiring in. So I would highly recommend everybody to please join the same, which is there. And then we have a pre-kickoff for AI for finance for level 2, which is there. तो ये आप देखना है तो देख सकते हैं. Guys, we are working lot of things for you guys free of cost. जितना हमारे से free होता है उतना हम कर रहे हैं. But of course, there are some of the programs which are paid programs which we also run, like an interview preparation batch, which is there. So you can also register for their same, which is starting from 9th. तो ये भी एक interview preparation batch है, which is there. इसका pre-kickoff has been uploaded on YouTube. You can check on the same. Right, the 92nd batch has been starting from 9th and 93rd is starting from 10th. तो दैट इज देयर. इसका अलग से क्या होगा इस बैच में, इस पे डेडिकेटेड वीडियो हैज बीन अपलोडेड ऑन माय चैनल. सर मान लीजिए आपका इंटरव्यू है एंड यू हैव इंटरव्यू इन सम ऑफ द कंपनीज. वी हैव डन अ ग्रेट वर्क फॉर यू. जितना फ्री होता है गाइस उतना डाले हमने, ठीक है. You can go to more section, more you will be able to see free downloadable resources. What is this? We have uploaded a reading material for multiple domains. So if you have interviewed in any of the companies, you can think of reading on the same. राइट, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन रीड इट आउट, रन थ्रू इट बिफोर द इंटरव्यू. दैट इज टेकन केयर ऑफ. इफ यू आर गाय ही वांट, नहीं ब्रो मुझे ना सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक ही प्रिपेयर करना है, आई हैव इंटरव्यू फॉर स्टार्ट ऑडिट, प्लीज हेल्प मी फॉर द सेम, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन दुबई और आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यू कैन गो फॉर अ सेपरेट मास्टर क्लास व्हिच इज देयर. अगर आप जीआर बैच लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूडेड रहता है. वन मास्टर क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट व्हिच इज देयर. Also, we have been working for you guys for a very great thing, and that is since we are working, we are the first one to build out one very great thing for this finance industry, right? And that is we have uploaded one more very great upscaling course, which I would highly recommend everybody to watch it. And that is related to AI for finance, which is there. We have uploaded till now 11 videos. Kal ek video aayega, which is there. So you can just start checking this out. There's a very good course on AI for finance. You can just check it out if you have a time. राइट, मतलब टाइम है तो करो. ये बहुत शानदार कोर्स है, विच इज देयर, अ वेरी नाइस फीडबैक. पर अगर उतना टाइम भी नहीं होगा तो एक लेक्चर नंबर 10 देख लेना बस. लेक्चर नंबर 10 में क्या है? लेक्चर नंबर 9. व्हाट इज लेक्चर नंबर 9 सर? लेक्चर नंबर 9 इज अबाउट वीबीए ऑटोमेशन. इफ यू वॉच दिस आउट, यू कैन अपलोड इट इन योर सीवी दैट यू नो द एडवांस एक्सेल एंड यू कैन से दैट कि मुझे वीबीए कोडिंग आती है. 60 मिनट्स में वीबीए कोडिंग सिखाइए गाइस, विच इज ए वेरी नाइस लेक्चर. अब खुद के मुझसे ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, बट आप खुद ही बता देना विच इज देयर. बट जितना फ्री में होता है उतना हम डालते हैं. बट ऑफकोर्स हमारा भी दाना पानी, एंड वी आर वर्किंग विद 30+ पीपल इन आवर टीम. तो सम कोर्सेज आर विच इज पेड, एंड ऑफकोर्स राइट, कोई कहता है कि फ्री में इतना कंटेंट है तो पेड में बहुत अच्छा रहेगा. तो दैट इज व्हाट द राइट एक्सपेक्टेशंस यू आर कीपिंग विद अस. तो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है. नेक्स्ट सर आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग वन मोर सेशन ऑन, आई विल बी अपलोडिंग वन मोर सेशन ऑन आईसीआई कैंपस फॉर्म फिलिंग, विच इज देयर. ये लाइव ही रहेगा, कल या परसों में डाल दूंगा, तो उस पर आप देख लेना चैनल पे आके. तो यू कैन जस्ट चेक ऑन द सेम. इट इज गोना बी हेल्पिंग यू ऑन दैट फ्रंट एज वेल. ठीक है. ये प्री किक ऑफ में क्या था, उसमें अगर देखना है व्हाट हैज हैपेंड इन द प्री किक ऑफ व्हिच इज हैपनिंग एंड स्टार्टिंग द न्यू बैच स्टार्टिंग इन, तो इसका प्री किक ऑफ कल का डला हुआ है व्हिच इज देयर. वी आल्सो हैड अ पास्ट सेशन फॉर यू गाइस ऑन व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीए, तो ये भी आप चेक कर सकते हो. जिसको दुबई का जाना है, दुबई के लिए एक सेशन हो चुका है which is there. So we have uploaded lot of good videos which is there. There's one more video on domain guidance. जैसे कि किसी को डोमेन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला भी एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज समथिंग विच वी आर गोना बी वर्किंग ऑन. रेज्यूमे बिल्डर के लिए भी वेबसाइट बता दिया है. पास कंपनीज जो कैंपस में आई थी उसका लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. तो जो भी देख रहे हैं, राइट, यू कैन जस्ट चेक द वीडियोस आउट विच इज देयर. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑन सपोर्ट यू ऑन दिस जर्नी. डन डन डन. ठीक है. नाउ आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स यू गाइस आर कैरिंग इन, बट आई विल बी रिस्ट्रिक्टिंग द डाउट्स टुडे रिलेटेड टू कैंपस ओनली. मैं कैंपस रिलेटेड ही डाउट लूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स हैं. इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, बट ये ऑफकोर्स अभी नहीं होगा, थोड़े दिन बाद चालू करते हैं हम लोग.
लास्ट अटेम्प्ट में वी हेल्प लॉट ऑफ पीपल आउट। ऑफ कोर्स जीआर वालों के लिए तो वी हैव अल्टरनेट डेज डाउट सॉल्विंग सेशन, बट काफी बार हम लोग अभी जैसे करियर कनेक्ट है ना, तो करियर कनेक्ट चालू करेंगे अभी, जैसे 6 सेशन हो चुके हैं इसके लिए। तो इसमें यू कैन आस्क एंड कम योर डाउट्स वन ऑन वन एंड यू कैन टॉक टू मी, बट ये अभी नहीं स्टार्ट होगा, इट इज गोना बी स्टार्टिंग इन फ्यू डेज। ठीक है, बट जीआर वालों के लिए एनीवेज वी हैव अल्टरनेट डेज डाउट सॉल्विंग सेशन, तो यू विल बी एनीवेज कनेक्टिंग विद मी ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। ठीक है, तो नाउ लेट्स ओपन द फोरम फॉर द डाउट्स विच इज देयर। आई विल बी हैप्पी टू टेक योर डाउट्स गाइस, वॉट एवर डाउट्स यू हैव, डोंट हेजिटेट, बट लेट्स रिस्ट्रिक्ट द डाउट्स टुडे रिलेटेड टू द कैंपस विच इज देयर। ओके सर? ओके सर, कैन आई चूज ओनली अ स्मॉल सेंटर? नो बेटा, आई वुड नॉट रिकमेंड, यू हैव टू चूज बोथ विच इज देयर, है ना? तो स्मॉल सेंटर में तो ज्यादा कंपनीज आती भी नहीं है विच इज देयर। रेज्यूमे बिल्डर का लिंक कहाँ है बेटा? tools.cmonk.com is a link for a resume builder which is there. सर माय इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम इज इन इंग्लिश, नो नीड टू वरी एज सच। सर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बता दीजिए। देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन, समवन कॉल्स इट्स टेक्निकल टेस्ट, समवन कॉल्स इट्स अ वर्सन टेस्ट, समवन कॉल्स इट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, समवन calls it as technical test which is there, but psychometric test meanings is your psychology and behavior is going to be analyzed which is there, right? So that is something which you have to understand. Number two, guys, I am saying that a lot of people are getting unnecessary stress and worry about their placements. It's my request. What is the request? I can give it to you. Please understand this journey is for 3 months, not for 3 days. ये जर्नी 3 महीने की है। ऐसा नहीं है कि मार्केट की वैकेंसी और जॉब एक ही दिन में सब भर जाएगी। भाई पहले प्रिपेयर तो करो, सीवी तो ढंग से बनाओ, प्रिपेयर इट वेल, गिव 1 or 2 मॉक इंटरव्यूज, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर इंटरव्यूज एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी। ऐसे ही मुंह उठा के चले जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, बिग फोर से रिजेक्शन आएगा, अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा। Right, today a lot of people have been giving an interviews, then they are getting rejections and they come to me and saying that sir अब टेंशन आ रहा है। अरे टेंशन तो आएगा ना, प्रिपेयर नहीं किया तो कैसे होगा? पहले पढ़ना पड़ेगा ना, दैट इज द बेसिक्स व्हिच इज देयर। Someone is asking, sir, do we get a investment banking companies or management consulting companies in a campus? Very less, to be honest, which is there. Investment banking and management consulting कम रहेगा, which is there. Mostly the company related to finance, you will be able to find it in a big four in the campus. And of course, I'll be sharing the list of previous campus so you can run through it after the same. And you will be also be able to see more of the CA firms, global firms, banking companies, right? Companies like Infosys, ये सब companies ज़्यादा दिखेगी। Should I spend 3-4 days in GR batch after before uploading? Yes, the answer is yes. Right? आपका CV रिव्यू होगा फिर आप अपलोड करना कैंपस में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Sir, till now I have not given any interview. What interview will the remaining time be sufficient for the preparing? The answer is yes. Right? The time is good enough. No need to worry. Sir, equity research investment banking I have told you, which is there. और कोई कह रहा है स्पेसिफिकली अहमदाबाद कैंपस में इक्विटी रिसर्च और IB आएगा क्या? तो मेरे एक्सपीरियंस से तो ना है, बट आ गया तो पता नहीं। बच्चा कहता है सर आप बताओ कौन सी कंपनी आएगी इस कैंपस में? बेटा मैं एस्ट्रोटॉक वाला पंडित नहीं हूं, मानता हूं मेरी दाढ़ी है बट सफेद नहीं है वो। बच्चा कहता है आप ही बताओ कौन सी कंपनी आएगी। भाई मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता कि कौन सी कंपनी 7 लाख देगी, कौन सी कंपनी 5 लाख देगी? राइट? आई मीन यू डोंट नो, आई डोंट नो, बट व्हाट वी नो, हिस्ट्री विल रिपीट, दैट इज व्हाट इज देयर। बच्चा कह रहा है कैन वी रिलाई ऑन कैंपस? बेटा यू सॉ द प्लेसमेंट परसेंटेज इन द कैंपस, I just show you on the same, right? 20-25% placement percentage, which is there. And one company has a probability of selection of 1/10. तो एक वैकेंसी है, उसके लिए 10 लोग के इंटरव्यू लेंगे वो लोग। Either there'll be a GD round, pre-screening round, HR round or a technical test. अच्छा, one more thing which I missed out to tell you. जैसे क्या होता है काफी बार कंपनीज है ना, if you could see this, I'll just share you the list again. Right, what happens when you see this list, all of a sudden last time this happened a lot, campus was a physical round and all of a sudden a lot of students comes in, the company was running a short of time, they started taking a GD। दिख रहा है क्या? एकदम से जीडी लेना चालू कर दिया, एकदम से जीडी लेना चालू कर दिया। बच्चा बोला यार ये क्या बात हुआ, ब्रोशर में तो नो लिखा था। ऐसा हुआ है काफी बार, एमएसके ने क्या लिखा, नो, ब्रोशर में नो लिख दिया और एकदम से जीडी ले लिया इंटरव्यू के दिन। बोले सर ये तो चीटिंग हुई। बोले काहे की चीटिंग, ये तो जीडी नो लिखा था, हाउ देन कंडक्ट जीडी। बेटा ऐसा ही है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं एंड मोमेंट में, दैट इज देयर। एक और केस मैं बताता हूं, वन ऑफ द बिग फोर का ही केस है। व्हाट हैपेंड, बिग फोर, वन ऑफ द बिग फोर हैव शॉर्टलिस्टेड लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इन देयर इंटरव्यू। हुआ क्या, सबके सब बच्चे एक साथ टूट पड़े एचआर पे। एचआर डर गई, वो बोली नहीं नहीं अब हम आपका वर्चुअल इंटरव्यू लेंगे, थैंक यू गाइस, वर्चुअल। बच्चा बोले व्हाट इज दिस, दिस इज चीटिंग। अरे काहे की चीटिंग, वो डर गई बेचारी एचआर, क्या करेगी बताओ। तो ऐसा भी हो सकता है, you have to be prepared for anything which is there for related to an interview। ठीक है, दैट इज देयर। एंड एनीवेज अब हम लोग तो जीडी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं बैच में, तो दैट इज गोना बी टेकन केयर ऑफ।
Sir, does a CMONC have a placement drive? Yes, we have a Sambhav placement drive, guys. The link for the same, of course, will be again be able to see in the YouTube description. दो links मैं upload कर दूंगा. Sambhav placement drive, where we also conduct a lot of placements for multiple companies, so you can also fill out the same. Sir, how do company conducts a virtual GD? No need to worry, right? They'll put 10 people on a spotlight and they'll be given a topic and they'll be speaking on the same. What about the virtual interview option? Please understand 80% of your interviews are going to be virtual. Only campus is happening physical, but other companies nowadays are conducting a virtual interviews only, which is there. If you did not got a mail from ICAI campus, I would highly recommend you should mail to an ICAI saying that you did not got a mail, your friend have got the same. ठीक है. Sir, what about the virtual options, sir? ये तो मैंने बता दिया है ना. कैंपस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा. कोई कह रहा है सर आप मेरे भविष्य बताओ कि मैं पुणे चूज करूं या मुंबई. मान लो मैंने गलती से बोल दिया मुंबई और आपको शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई, आप तो मेरे यूट्यूब कमेंट पे गाली लिखोगे कल से. बोलोगे सर बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट गॉट शॉर्टलिस्टिंग, माय फ्रेंड हु हैज चूजन अ पुणे हैव गॉट मोर शॉर्टलिस्टिंग. तो दैट इज व्हाई आई नेवर कमेंट ऑन एनी ऑफ द सेंटर. सेंटर सिलेक्शन विल बी योर्स व्हिच इज देयर. कोई कह रहा है सर the consent limit of 4 is for big 4, is for big center or small center, or both are separate? Both are separate. 4 big के 4 small के, total 8, total 8. 4 big centers, 4 small centers, total 8. ओके. कोई कह रहा है एक्सपेक्टेड सैलरी कितना लिखे कैंपस प्लेसमेंट में, विच इज देयर. डोंट वरी, विल बी डिस्कसिंग ऑन द सेम विच इज देयर व्हेन आई विल बी अपलोडिंग अ सेशन टुमारो, राइट. एक्सपेक्टेड सैलरी पे मैं आपको बता दूंगा कितना लिखना है. डोंट नीड टू वरी एज सच. टुमारो आई विल बी अपलोडिंग वन वीडियो ऑन हाउ टू फिल आउट अ कैंपस फॉर्म. इज्जत से देखेंगे विच इज देयर. टुमारो और डे आफ्टर, मोस्टली आई विल बी डूइंग इट ऑन मंडे और ट्यूसडे विच इज देयर. तो डोंट वरी. कोई कह रहा है आई एम स्टक इन दुबई, शुड आई रजिस्टर फॉर अ कैंपस? आई वुड रिकमेंड yes. Sir, there is a GD on 27th to 30th March. What if we are not on that dates? नहीं बेटा, मुस्कान कह रही है कि अगर मान लो मैं इंटरव्यू में ही नहीं गई तो क्या होगा, क्या पेनल्टी लगेगा? नो, पेनल्टी इज ओनली अप्लीकेबल व्हेन यू सिट इन इंटरव्यू, गेट सिलेक्टेड, साइन योर डिक्लेरेशन. आपने एक बार बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है, हाँ, तो फिर सजा मिलेगी, है ना. उसके पहले नहीं मिलेगी बेटा. ठीक है, तो दैट इज देयर. Sir, suppose I live in Jaipur and since interviews are face to face, doesn't that automatically rule out the other centers for me? Otherwise, हाँ नहीं बेटा, you are supposed to select only one big center. तो जो 9 बड़े सेंटर है उसमें से सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए. कोई कह रहा है मैं इतने सारे इंटरव्यू कैसे दूंगा इतनी सारी तारीख पे? भगवान, बच्चा कह रहा है कि मैं दिल्ली में कैसे रहूं 6 तारीख को और मुंबई में कैसे रहूं 6 तारीख को. हे भगवान, कोई बात नहीं, आप अपने भाई को भेज देना. अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक ही जगह दे सकते हैं यार. ठीक है. यस, कोई कह रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है. देखा, इशू आने चालू हो गए. कोई बात नहीं, आईसीआई का आप सपोर्ट नंबर को यूज करिए. Now one more thing. Now before campus you will be getting an orientation. Orientation मतलब क्या होता है? I've already told you. It's like a guidance session for you. ज्ञान दिया जाएगा आपको कि कैसे इंटरव्यू में बैठना, कैसे तैयारी करना. फिर वहां पे बढ़िया बढ़िया यू विल गेट अ डिनर, एंड डिनर तो नहीं मिलेगा, लंच एंड सम स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट. कभी कभी वो लोग किट विट भी दे देते हैं. आई डोंट नो दिस टाइम दे विल गिव और नॉट. ठीक है, तो दैट इज देयर एंड यू कैन गो एंड मीट योर फ्रेंड्स. तो सर, कैन द ओरिएंटेशन सेंटर बी द डिफरेंट देन माय बिग सेंटर? द आंसर इज यस. मान लीजिए मैं ओरिएंटेशन जयपुर में करूं और मेरा सेंटर चूज करूं फॉर एन कैंपस इंटरव्यू द बिग सेंटर, कैन इट बी मुंबई? द आंसर इज यस. ये अलग अलग हो सकता है. ओरिएंटेशन सेंटर कैन बी अ डिफरेंट देन अ कैंपस सेंटर. ओरिएंटेशन इज जस्ट लाइक अ ब्रीफिंग व्हिच इज दैट. कैन वी कैन वी चूज ओरिएंटेशन स्मॉल सेंटर? हे भगवान, ओरिएंटेशन एक ही बार होगा पूरे कैंपस का. ओरिएंटेशन का कोई स्मॉल सेंटर नहीं है राजा. सिर्फ एक ही 9 या 10 सेंटर होंगे विच इज देयर. एंड आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट अ मेल आल्सो फ्रॉम आईसीआई विच इज देयर. ठीक है सर. सर, फ्लाइट की टिकट शॉर्टलिस्टिंग के बाद बुक करें? द आंसर इज यस. शॉर्टलिस्टिंग के बाद ही फ्लाइट की टिकट बुक करें, नहीं तो पता पड़ा कंपनी ही नहीं आई और तुम चलती है. वाह भाई वाह, है ना. तो तुम फिर गाली दोगे यार, टिकट भी गई, पैसे भी गए, खाना भी नहीं मिला. तो पहले शॉर्टलिस्टिंग आने दो, देन यू बुक योर फ्लाइट टिकट्स एंड स्टफ. What percentage of students will
गेट शॉर्टलिस्टेड? ये तो बेटा एकदम ऋषि मुनि वाला सवाल पूछ रहे हैं। बट आई कैन टेल यू व्हाट परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट विल गेट प्लेस्ड, अराउंड 20 to 30%। 20 से 30% बच्चे प्लेस होंगे कैंपस से। सर इतने श्योर कैसे हो? मैं नहीं बोल रहा हूं, कैंपस का हिस्ट्री बोल रहा है, विच आईसीआई हिम देमसेल्व्स हैव पुट इट इन द ब्रोशर। ठीक है सर। सर कैन आई शो एडिशनल डिग्री? ये सब हम कल डिस्कस कर लेंगे इन द फॉर्म फिलिंग विच इज देयर। शुड वी फिल अ फॉर्म बिफोर जीआर बैच? नो, विल हैव अ सेपरेट सेशन फॉर यू गाइस अगेन, डोंट वरी। हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म विल गाइड यू, डोंट वरी। सर व्हाट अबाउट द वर्चुअल ऑप्शंस ओपन इन द पोर्टल? इस पे पोर्टल का फॉर्म फिलिंग पे विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन। Sir, can I take an interview batch preparation? How can I take? How can क्या? You can go to my website and then you can take. फ्लाइट टिकट रियम्बर्स होगी क्या? नालायक। सब कुछ रियम्बर्स होगा सीए बनने के बाद से। बस जाना पड़ेगा पापा मम्मी के पास, वो बरोबर से तुम्हारा रियम्बर्समेंट करेंगे। ये कह रहा है फ्लाइट टिकट आईसीआई क्या रियम्बर्स करेगा? क्या क्लाइंट के ऑडिट पे जा रहे हैं क्या? ये भगवान, ये तो भावुक हो गया रे। ठीक है, डन डन डन। ठीक है ना? तो लेट मी सी एनी इंपॉर्टेंट डाउट, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन। कुछ लोग अब मेरे मजे लेने पे उतर गए हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही सबमिट हो रहा है? द आंसर इज यस, दैट इज सबमिटिंग ओनली इन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों पर दया करते हैं क्या? देखो यार, शॉर्टलिस्टिंग पे डिपेंडेंट है विच इज देयर, बट आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आपके अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा है, एक छोटा सा नम्र निवेदन विनती है, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग ऑफ कैंपस। कैंपस इज अ एडेड एडवांटेज, आईसीआई की तरफ से जितना बेस्ट हो रहा है दे आर डूइंग द सेम। कैंपस एक एडेड एडवांटेज है सभी के लिए। मिला बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बुक नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को, मैंने अप्लाई नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो, रिसर्च करो, नेटवर्क बनाओ, अप्लाई करो ऑफ कैंपस। ठीक है सर, डन डन डन। सर मोर देन 15 अटेम्प्ट, ये इंसान तो भाई क्या लिख रहा है? मोर देन 15 अटेम्प्ट बट हैव एडिशनल डिग्री वर्क एक्सपीरियंस, क्या सेक्शन, क्या सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन कंपनी टू कंपनी ब्रदर। सम कंपनीज विल सी डिग्री, some companies will see attempt, some companies will see your CV, some companies will see your articleship form name। सर एक कंपनी का अपना अपना शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर है। ठीक है, डन गाइस, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज। बट स्टिल गाइस, इफ यू हैव, डिक्लेरेशन में सिग्नेचर कैसे डालू सर? बेटा पीडीएफ में वर्ड में सिग्नेचर नहीं डाल पा रहे हो आप, ऐसे मत करिए, इमेज कॉपी करिए, इमेज को डाल दीजिए। दैट इज देयर, आइडियली दे शुड अलाउ द पीडीएफ व्हिच इज देयर। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे, विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग सेशन वेयर आई टेल यू हाउ टू फिल आउट अ कैंपस फॉर्म। लास्ट थिंग बिफोर आई क्लोज द वीडियो, मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स है आपके, राइट? तो व्हाट आई डू, आई, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज गो टू माई एग्जिस्टिंग वीडियो ऑन अ यूट्यूब गाइस विच इज गोइंग लाइव एज ऑफ नाउ। जो भी लाइव चल रहा है वो वीडियो देख लो। ठीक है, उस वीडियो के पहले तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक करिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक द डिस्क्रिप्शन, check each and every file which is there on the description guys, right? I'll be uploading all the important files which is there on the description of a video. That is the first thing everybody has to do. Second thing sir, right, if you have not subscribed my channel, please subscribe it, अभी कर लो, बाद में जॉब लग जाएगी जाके अनसब्सक्राइब कर देना, ना नहीं बोलूंगा मैं, बट अभी कर लीजिए, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट्स एंड द वीडियो फॉर यू गाइस, सो दैट यू शुड नॉट मिस आउट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। काफी सारा कैंपस रिलेटेड, ऑफ कैंपस रिलेटेड, कंपनी स्पेसिफिक विच इज देयर, एंड आई एम पोस्टिंग लॉट ऑफ गुड कंटेंट ऑन माई चैनल, तो प्लीज उसको आप जाके चेक कर लीजिए। नंबर 3, I'll be uploading the campus list for the last attempt. I'll be sharing with you guys in the portal. You'll be able to see the same. वो आपको एक मिल जाएगी। ठीक है, नंबर 4, राइट, अपकमिंग डेज में जैसे टुमारो वी हैव अ नेटवर्किंग सेशन, यू कैन ज्वाइन। विप्रो का सेशन यू कैन ज्वाइन। विप्रो का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, फिर बाद में मत बोलना कि रिकॉर्डिंग दो, नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, तो देयर इज अ लिमिट ऑन जूम व्हिच इज देयर, प्लीज अंडरस्टैंड द सेम। ठीक है, और अभी जो भी डाउट्स है, वट एवर द क्वेरीज विच आर लेफ्ट, मुझे पता है बहुत सारे दुख दिक्कत तकलीफें हैं आपको, डोंट वरी, बड़ा भाई है आपके साथ इन दिस जर्नी टिल द टाइम यू गेट प्लेस। मेरा तो काम ही यही है, यू पुट इट आउट इन योर कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब, मैं वो कमेंट्स नोट डाउन कर लूंगा। कल एक मैं वीडियो वैसे ही कैंपस फॉर्म का आई एम गोना बी अपलोडिंग, हाउ टू फिल आउट अ कैंपस फॉर्म, यू कम सी व्हाट इज देयर, हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म, एंड आई विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेरीज व्हिच इज देयर। ठीक है दोस्तों, डन, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा राइट, दोज हु आर सीरियस एंड लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू प्रिपरेशन, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th। एक बार बैच चालू हो गई उसके बाद हम वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, आपको फिर आना पड़ेगा अगली बैच में जो 10 से, और 10th वाली चालू हो गई तो फिर तो भैया अगली बैच सीधा चालू होगी 23 तारीख को। तो बेटर यू रजिस्टर इट नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड सीरियस। इफ नॉट देन ठीक है, आपको खुद से कर रहे हो तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। ठीक है, डन डन डन। आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर नाउ। अब बढ़िया से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। Meanwhile, those who have already registered, please start watching my AI for Finance के lectures. It is going to be giving you an edge in interview, which is there. आपको एक छोटा सा edge मिल जाएगा कि you can say that कि I know AI, I know how to automate the stuff which is there. But still, अगर किसी को और भी कोई दुख, दिक्कत, तकलीफ, पीड़ा, ईर्ष्या, भय, गम होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके वो बयां कर देंगे। We'll be happy to solve your doubts. ठीक है, बट सो फॉर आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड हाउ द कैंपस वर्क्स। अब सबको क्लियर है कैंपस वर्क कैसे करता है, फॉर्म कैसे भरना वो कल सिखा देंगे, बट कैंपस कैसे वर्क करता है इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। इन द चैट बॉक्स बता दीजिए बिफोर वी क्लोज। क्लियर क्लियर के नॉट क्लियर? क्लियर सर, अब सब साफ है सर, अब हमें पता है कि कैंपस कैसे वर्क करता है। वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड। चलो ग्रेट, डोंट वरी, शुभम विल गाइड यू अबाउट ऑफ कैंपस ऑल्सो इन द बैच इटसेल्फ, डोंट वरी। ठीक है, चलो नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करें। राइट, टेंशन मत लीजिए। राइट, आपका जर्नी हमारे साथ है तो बढ़िया से टेंशन मत लीजिए, आप हम साथ में मिलके फोड़ेंगे। राइट, बच्चा कह रहा है क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं? बेटा अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो सबसे पहले आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सामने वाला क्या लेगा आपको? अटेम्प्ट मैटर करते हैं, द आंसर इज यस, बट इट विल बी बाईपास इफ योर सीवी एंड द स्किल इज स्ट्रांग। अगर आपके पास कुछ अच्छा है बेचने के लिए तो वो बाईपास कर जाएगा उस जर्नी को। ठीक है, दैट इज दैट। चलो, डन 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 विद दिस वी आर गोना बी क्लोजिंग फॉर द डे। इफ यू हैव डाउट्स पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब, आई विल बी हैप्पी टू टेक योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। विल मीट टुमारो आफ्टरनून। कल आइए बढ़िया से नेटवर्किंग करेंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, विच इज देयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो भाई, जो कैंपस वाले हैं उनका भला कर दो, पुण्य मिलेगा। पुण्य कर्मा कहते हैं ना, कर्मा, आह, गुड कर्मास। भगवान खुश होके क्या पता तुम्हारे लिए जॉब वैकेंसी भेज दे, है ना, है कि नहीं?